Hello everyone, welcome you in tenses series. We have talked about the action which was already happened. That means past tense. We have talked about that the action which is happening right now. That means present tense. Now we are going to talk about the action which have happened not yet, which we have to do plan and happen in the future, in the later future. अभी तक हम पढ़ चुके हैं उन एक्शंस के बारे में जो कि हो चुके थे. दैट मीन्स पास्ट टेंस. हम पढ़ चुके हैं उन टेंसेस के बारे में, उस एक्शन के बारे में भी जो एक्शन चल रहा था. दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस. नाउ अब बारी है उस टेंस के बारे में पढ़ने की जिसके बारे में हमने प्लान कर रखा है और वो आगे चल के हमारे भविष्य में होने वाला है. दैट मीन्स फ्यूचर टेंस. सो लेट्स स्टार्ट द टेंसेस सीरीज ऑफ फ्यूचर टेंस. सो इन फ्यूचर टेंस सीरीज फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सिंपल फ्यूचर टेंस. So today I will tell you that how to form this tense, where we can use this tense and other variations to express the future tense like simple present tense, present continuous tense. So let's start with simple future tense. First of all, before going to the format, you know one thing properly, that in this tense the subject or the auxiliaries are not categorized by the singularity and the plurality of the subject and as the previous tenses. इस टेंस के अंदर जो आप पैसे पहले ले लेते हैं, हम ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते थे सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने इज एम का यूज कर लिया, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने आर का यूज कर लिया. ऐसे ही पास्ट के अंदर आपने वॉज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर विद प्लूरल सब्जेक्ट. बट इन दिस टेंस according to the singularity and plurality, no need to use the auxiliary or modals verbs, whereas in this tense categories are divided according to the persons. According to the person we will use our auxiliaries. Like that we have three person. First person, then our second person, and last it our third person. First person means the speaker of the sentence, जो कि बोल रहा है, और वो होते हैं I and we. Okay. Then the second person, who is the listener, like you. Here I am the first person because I am the speaker here and you are the listener, so you are the second person here. So you is the second person. Okay. Then the third person, third person other persons, which means first person and second person will talk about them, जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करते हैं, और वो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द थर्ड पर्सन वाज प्रेजेंट देयर. इसका मतलब कहीं कंपल्सरी नहीं है कि थर्ड पर्सन वहां पर प्रेजेंट ही होगा. सो थर्ड पर्सन्स आर ही, शी, इट, दे and your noun means name of anything. I, we is the speaker, you here is the listener, and he, she, it, they, noun is the third person here. So in this tense auxiliaries will be used according to the persons, not the singularity or the plurality of the subject. इस टेंस के अंदर आप जो ऑक्सिलरीज यूज करोगे वो
पर्सन्स के अकॉर्डिंग करोगे, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। इससे पहले हम करते आए थे सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी के अकॉर्डिंग। सो इस वाले टेंस के अंदर हमें वो नहीं करना है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द फॉर्मेट ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस। The format of the simple future tense is, first of all, write the subject. Okay. Then take the modal auxiliaries will or shall according to the person of the subject. आपका सब्जेक्ट का पर्सन कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आपको will और shall का यूज करना है। And then base form of the verb first form, and at the last your object will come. Okay, so this is the format of simple future tense to frame the sentences in simple future tense. As you know very well, our format is changed according to the type of the sentences. जैसा कि आप जानते हो इस फॉर्मेट के अंदर हमको लिटिल बिट चेंजेस करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग हमको इस फॉर्मेट के अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं। वो चेंजेस क्या करने होते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट, इफ यू हैव अ पॉजिटिव सेंटेंस, नेक्स्ट वन इज इफ यू हैव अ नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इफ यू हैव अ interrogative sentence. Okay, so what will the format to frame the sentences in that? First one is positive and second one is negative and third one is interrogative and the fourth one is interrogative negative. So first of all, take the subject. Our subject is I, we, you, they, he, she, it, and at the last your noun. As you know, as I have told you that in that tense we'll use the auxiliaries according to the persons, not according to the singularity or plurality of the subject. So here you can see our first persons here. Okay, and with the rest of the subjects we will use the same auxiliary because here is only two auxiliaries. So with first person we will use shall. Okay, then verb first form. Okay, and with the second person, use the second person here, and with the third persons we will use will auxiliary, and after that verb first form. If I take a verb dance here to frame the sentence, so how can we frame the sentences? Listen it carefully. I shall dance. We shall dance. You will dance. They will dance. He will dance. She will dance. It will dance. And noun means Ram will dance. Mohan will dance, and Sheetal will dance. So like in this way you can frame the sentences according to the type of the sentence. If you have a positive sentence, if you want to frame a positive sentence, then you can use that type of format to frame the simple future tense. Okay, now the second one is negative sentences. What we change, what we have to change to frame the negative sentence, but we have to change the sentence positive to negative is same like that. If you have subject I, we, you, they, he, she, it, and at the last your noun. Here you can see that I and we is the first person, so with first person, but we will use shall. So shall, and here these are the second or third persons, so with these we will use will.
Then a little bit change here, comparison to positive, put the negative word not before the helping verb, before the main verb or after the helping verb. So not here, and then your verb first. Same like that, will not plus verb first here. Okay, so in this way you can frame your sentences. So for negative, you put the negative word between the helping verb and the main verb. If we have the first person, then take the auxiliary verb shall. If we have the second person or third person, then we will take auxiliary verb will and put the negative word between will and main verb. So if we have the same verb dance to frame the sentences, how can we frame? Listen, I shall not dance. We shall not dance. You will not dance. They will not dance. He will not dance. She will not dance. It will not dance. And the noun, Ram will not dance, Sita will not dance, and Sheetal will not dance. So like in this way you can frame the negative sentences of simple future tense. Now the next one is interrogative sentences. If you want to frame a sentence in interrogative of simple future tense, so what will the format to frame that type of sentences? The format is, if you have the subject I or we, means first person, then take the auxiliary shall, because we are using shall auxiliary with the first person. So we take our auxiliary first to frame the interrogative sentences. So shall here, shall, then your subject I or we first person, then your base form of the verb first form, and at the last your question mark object will come also. Okay. If you have the second person or third person as a subject, then what will the changes? And your auxiliary will come first, then your subject first person or second person, you, they, he, she, it, and noun, and then your verb first, and at the last put the question mark. Don't forget to put the question mark at the last. Okay. So if we have the same verb to frame the sentences, how can we frame the sentence in interrogative? So how can we frame? Shall I dance? Shall we dance? Like that. If you have the second person or third person, so will you dance? Will they dance? Will he dance? Will she dance? Will it dance? Will Ram dance? Will Sita dance? Will Sheetal dance? So like in this way you can frame the sentences, interrogative sentences of simple future tense. If you want to frame the sentences in interrogative negative, so what will the structure to format that type of sentences? Here you have to put a single word to change the sentence interrogative to interrogative negative. And all of you know very well what is the word here, that the word is not. So put the not. Put the not here, not, and then your verb first and at the last question mark. Same like that here, put the not and your verb first and question mark at the last. If you have first person as a subject, then take the auxiliary shall, then your subject, then negative word not, then the base form of the verb, and at the last question mark. Same as if you have the subject of second person and third person, then put the will first, auxiliary will, then your subjects, then no, negative word not, and then verb first and at the last question mark. Same as if you have the same verb to frame the sentences, how can we frame? Say, shall I not dance? Shall we not dance?
Okay, if we have the second person or third person, so how can we frame? Will you not dance? Will they not dance? Will he not dance? Will she not dance? Will it not dance? Will Ram not dance? Will Sita not dance? Will Sheetal not dance? So in this way you can frame the many types of sentences according to the types of the sentences of सिंपल फ्यूचर टेंस. सो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट्स बताए हैं, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए, तो इन फॉर्मेट्स को फॉलो करके आप सिंपल फ्यूचर टेंस के टाइप्स, सेंटेंस के टाइप्स के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो. सो इट इज वेरी इजी. सो नाउ as you know, as I have told you that how can we use, so this way you can use, and the second one is where we can use. So the second point is where we can use. Now the uses of the simple future tense. So here are the uses of your tense. First one is to express an action or event that is yet to be take place, जिसने अभी जो काम अभी तक हुआ नहीं है, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए. सो द एग्जांपल इज आई शैल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग. रिमेंबर वन थिंग, here we can use also I am going to the market in the evening. What is the difference here? Both the sentences are correct. If we write here I am going to the market in the evening, both are the sentences are correct here. But what is the difference here? If you express a planned future, जो आपने प्लान कर रखा है completely, आप उसके लिए आप present continuous tense का यूज करोगे. As you know that I have told you about that, with to express the near future action we use present continuous tense also. So लेकिन अगर आपका जो प्लान है वो कंफर्म नहीं है, डेफिनेट नहीं है, नॉट कंफर्म, लेस कंफर्मेशन है आपके पास, तो आप शैल का यूज करोगे, शैल का और विल का यूज करोगे, मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस. अगर आपका एक्शन कंफर्मेशन के साथ है, ठीक है, कंफर्म है, तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर लेके जाओगे, ठीक है. लेकिन अगर आपका जो एक्शन है आगे जो इन फ्यूचर होने वाला है, वो प्लान जो एक्शन है वो लेस कंफर्मेशन के साथ है, डेफिनेट कम है, तो आप वहां पे सिंपल फ्यूचर टेंस के ऑक्सिलरीज का यूज करोगे, एज शैल और विल का यूज करोगे. ओके, क्लियर. नाउ द सेकंड पॉइंट इज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन अबाउट फ्यूचर. व्हेन द स्पीकर से अबाउट समथिंग, then when he tells you about his or her experience or opinion about the what will come, what will happen in the future. So to express the opinion of the speaker we can use simple future tense. स्पीकर जब आपने कोई बात बोलता है तो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए वो इसका यूज कर सकता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का. सेम से द एग्जाम्पल है I think he will win the race. मुझे ऐसा लगता है. That means it is not confirmed that it is compulsory that he will win the race. ये कोई compulsory नहीं है, compulsion नहीं है यहाँ पे कि वो जीतेगा ही जीतेगा. It's my opinion that he will win the race. कि ये मेरा opinion है कि वो रेस जीत जाएगा. It's totally a imagination, not the surety of the action. Okay. So these are the uses. Now remember one thing, as you know that first person take shall as a modal auxiliary, and your rest of the subjects he, she, you, they, it and the noun take the will as an auxiliary. But it is not compulsory that I or we always take shall as an auxiliary. On the other hand, it is not compulsory with the rest of the subjects take the will always as an auxiliary. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है कि I और we हमेशा
shall ही एज ऑक्सिलरी लेंगे और आपके जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि you, they, he, she, it and your noun कि वो हमेशा will का ही यूज करेंगी. They can be reverse their situation. वो अपनी सिचुएशन को, वो अपनी इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन है, ये टर्म्स हैं कि आई और वी के साथ आपको शेल का यूज करना है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस के साथ आपको विल का यूज करना है, वो अपने इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को रिवर्स भी कर सकते हैं. मीन्स रिवर्स मीन्स चेंज. आई और वी के साथ विल और रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के साथ शेल. बट व्हेन, किस टाइप की सिचुएशन के अंदर हमको ये सब करना है? व्हेन, टेक एन एग्जांपल टू नो द रूल्स ऑफ आई विल, shall. So here, as you, we can use will with I and we subject to express intentions. अपनी जो स्पीकर है उसकी इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, और टू एक्सप्रेस प्रॉमिस. ओके, so to express promise, intentions, determination, we can use will with the subject, with the first person I or will. On the other hand, we can use shall with the rest of the subjects like he, she, it, you, they, noun, etc. to express the permission, compulsion, threat, command. Okay, जब आपके सेंटेंसेस के थ्रू आपका इंटेंशन, आपका जो प्रॉमिस है वो, आपकी डिटर्मिनेशन है वो, ये एक्सप्रेस करनी हो तो आप इनको रिवर्स कर सकते हो. मीन्स आई और वी के साथ फिर आपको विल का ही यूज करना होगा. ओके, अगर आपके सेंटेंस से क्या शो हो रहा है? इंटेंशन शो हो रही है, प्रॉमिस शो हो रहा है, या डिटर्मिनेशन शो हो रहा है. और दूसरी तरफ अगर आपके सेंटेंस से प्रॉमिस शो हो रहा है, आपका कंपल्शन शो हो रहा है, ड्यूटी शो हो रही है, आपका थ्रेट, धमकी शो हो रही है, कोई कमांड शो हो रही है, तो आपको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ जहां हम विल यूज करते हैं वहां आपको शैल का यूज करना है. सो इट कैन बी रिवर्स. इन्होंने अपना जो है कंडीशंस और सिचुएशंस को क्या कर लिया? रिवर्स कर लिया. सो दे कैन रिवर्स देयर सिचुएशन. ओके, सो here is the example. Here I will, with I will come, but rest of the sentence check. I will wait for you near लाल चौक. It is the promise कि हम कल यहाँ तुम्हारा लाल चौक पर वेट करेंगे. It is the promise to your friends. It is your promise to your friends. So it is the promise. To express the promise with I, we will use auxiliary will. So I will wait for you near लाल चौक. Now see the next example. They shall pay a heavy price for this misadventure. With they, according to the rule, but will come. With they will come, but the sentence is in threat, command. धमकी है ये. So to express the threat, we will use with the third person or with the second person use auxiliary shall. So here they shall pay a heavy price for this misadventure. Okay, so in this way you can use your simple future tense. Now, as I have told you that instead of simple future tense, in many sentences we are use simple present tense and present continuous tense also. Simple present tense, so here are the some variations to express the future tense. With the simple present tense and the with present continuous tense, we also express the future. So first one is in the simple present tense, to express definite plans that will cannot be changed. ऐसे plans, ऐसे action जिसके बारे में आपने तय कर लिया है और वो चेंज नहीं हो सकते, उसके लिए हम यूज करते हैं simple present tense to express the future. So here is the example. We fly to Toronto on Sunday. That means your tickets are booked and your luggage are packed and all things are ready. So we fly to Toronto on Sunday. So it is the
डेफिनेट एक्शन दैट विल हैपन ऑन संडे। ये एक डेफिनेट एक्शन है जो कि होगा, किस दिन होगा, संडे को होगा। सो फॉर डेफिनेट एक्शंस ऑफ फ्यूचर एक्सप्रेस टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑल्सो। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फर्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस प्लान्ड एक्शन फॉर फ्यूचर। प्लान्ड एक्शन इन द नियर फ्यूचर। आज हम शाम को मूवी देखने जा रहे हैं, आई एम या वी आर going to watch movie in the theater, like in this way. Here the example, we are leaving at the end of the week. हम छोड़ जाएंगे, हम जहाँ रह रहे हैं उस जगह को हम छोड़ देंगे, कब तक, इस वीक के एंड तक। सो इट इज द प्लान, फ्यूचर प्लान, कि हम उस टाइम तक हम छोड़ देंगे। ओके, व्हाट इज प्लान? आपकी जब किसी काम को करने की प्लानिंग हुई है, इफ आई से I am going to prepare a cup of tea. Anybody want to take? If I say I am going to prepare a cup of tea, anyone want to take? आप में से भी कोई लेना चाहता है? Then Joy said, I will take. See what is the difference here? If I say I am going to make a cup of tea. Okay, these are my words. See here I am using I am going. It is my plan. ये मैंने प्लानिंग कर ली है कि मैं चाय बनाने जा रही हूँ। Okay, so I am going to make a cup of tea. Anybody want to take? कोई लेना चाहता है? Then Joy said. Then Joy ने कहा, yes, I will take. Here will come. Why? Because Joy's action was not planned. Joy ने एक्शन सोच नहीं, प्लान नहीं कर रखा था। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हैपन हुआ है। कि उसने बोला कि मैं चाय बनाने जा रही हूँ, मैंने बोला मैं चाय बनाने जा रही हूँ, जॉय ने सुना और जॉय ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन दे दिया। So it is not planned. So understand the difference here. If your action is planned, then you will use present continuous to express that planned action of future. But if your action is not planned, then simply you can use simple future tense in the sentences. Same as like that. मैंने यहाँ बोला कि मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तो ये मेरा प्लान था, ये मेरा प्लान है कि मैं बनाने जा रही हूँ। ठीक है, मैंने पूछा कि कोई और लेना चाहेगा, तो जॉय ने कहा यस आई विल टेक, हाँ मैं लूंगा। क्योंकि आपने यहाँ पे विल क्यों यूज किया? क्योंकि एक्शन जो जॉय का था वो प्लान नहीं था पहले से। ये कब राइज हुआ? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने बोला, तो ये पहले से प्लान नहीं था, इसलिए आपने यहाँ पे विल का यूज किया। आपकी बात, आपका एक्शन जब डेफिनेट होगा, डाउटलेस होगा, तो आपको वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। लेकिन जब आप डाउट में हो, आपका जो एक्शन वो डेफिनेट नहीं है, तो आपको संभावना की स्थिति के अंदर आपको किसका यूज करना है? फ्यूचर टेंस का यूज करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड व्हाट? प्लान्ड एक्शन। प्लान्ड एक्शन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय इज, एम, आर, बी फॉर्म of your continuous tense, and then infinitive form, to plus verb first, and other one also is, am, are your be form, then about, then to, then your verb first, about plus infinitive form. Okay, so this way you can also express the future, planning future. Okay, so the train is about to leave, कि जो ट्रेन है वो बस निकलने ही वाली है, निकली नहीं है। अगर निकल चुकी होती तो परफेक्ट हो जाता, निकल रही होती तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन अभी निकलेगी तो ये फ्यूचर हुआ। लेकिन ये क्या है? आपका प्लान एक्शन है कि ट्रेन का टाइमिंग है, वो अपनी टाइमिंग पे ही निकल के जाएगी। सो आपने यहाँ पे क्या यूज किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड आप इन दो तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हो, इज, एम, आर
then infinitive form, and other one is are, then about, and then your infinitive form. So in this way you can use the variations to express the future tense. Now, so students, this is the simple future tense. Now we are going to teach about the future continuous tense, second part of the future series, that is future continuous tense. Here future continuous tense. Future continuous tense is little advanced than simple future. Simple future tense tells about that the action in future, whereas future continuous tense tells about the actions continuity in the future. क्या डिफरेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर? सिंपल फ्यूचर टेंस क्लियरली हमको सिर्फ ये बताएगा कि आपका फ्यूचर में काम क्या होगा, आपको ड्यूरेशन से रिलेशन नहीं होगा, उसकी कंटिन्यूटी से फॉर्म आपको पता नहीं चलेगा। ओके, इन द नेक्स्ट इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको कंटिन्यूटी के बारे में पता चलेगा। इन कंटिन्यूअस टेंस जनरली वी गिवन द टाइम रेफरेंस when we'll start and our action and to continue for time. ओके, तो आपको कंटिन्यूस के अंदर आपको क्या मिलेगा, टाइम रेफरेंस मिलेगा एक्शन के लिए कि हमने कब से उसको स्टार्ट किया, क्या ड्यूरेशन चली, मतलब आपके कब जो काम होगा वो कंटिन्यूटी फॉर्म के अंदर होगा इन फ्यूचर के अंदर। और जबकि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या बता रहा था, दैट द एक्शन इन फ्यूचर, सिंपल सा एक एक्शन जो फ्यूचर में होगा, बस उसकी कंटिन्यूटी, उसका ड्यूरेशन, उसका टाइम ऑफ पीरियड क्या था, उससे आप उसका सिंपल फ्यूचर टेंस का कोई लिंक नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फॉर्मेट टू फ्रेम द सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? द फॉर्मेट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन वी विल टेक ऑक्सिलरीज will or shall. Same rule as the simple future tense, then be, then your verb first form plus ing means your verb fourth form. You can reverse it also, verb fourth here and verb first plus ing, like in this way. Through this format you can frame the sentences of future continuous tense. Here take the auxiliary according to the person. If you have a person like first person, then take shall. If you have third person or second person as a subject, then take will. Then your be, then your verb fourth form. Here you can see future continuous. So it is a combination of future or continuous tense. You can see that in every continuous tense, which means present continuous, past continuous, and now in the future continuous also, you can see the similarity. Verb fourth form. Only the auxiliaries will change. केवल auxiliaries change होती है, बाकी tense के according देखो continuous में verb fourth form, verb fourth form is common in every tense in continuous. In perfect, verb third form common. Okay, so here it is a combination of future and continuous tense. So demand of future is verb first form with will or shall. So will shall be is the first form of be, okay, base form, and then the verb fourth form, it is the fulfillment, the continuous tense. Okay, so this is the basic structure of future continuous tense. Now as you know very well, and then I have told in the previous videos also with the every and each tense that the format of the tense change according to the type of the sentences. ये जो format होता है ये sentence के types के according change हो जाता है। ये आपने मैंने हर अपनी वीडियो के अंदर बताया है, हर जब मैंने कोई भी आपको टेंस पढ़ाया इसमें मैंने ये बात क्लियरली आपको बताई है। नाउ द व्हाट विल द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस?
for future continuous tense is positive if you have the positive sentence, if you have the negative, and if you have the interrogative. If you have the positive, then I, we. First person, if you have the subject first person, then shall plus be plus verb fourth form. Same if you have second person and third person as the subject, then will. Okay, will plus be plus verb fourth form. If you here you can see, अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो आपको I or we, then shall, then be, and then the word fourth form. Same like that, if you have subject as second person or third person, then take the auxiliary will, then be, and then the word fourth form. If you have verb jump here, if you have the verb jump here, so how can you frame the sentences of positive? Then I shall be jumping, we shall be jumping, you will be jumping, they will be jumping, he will be jumping, she will be jumping, it will be jumping, Rehan will be jumping, Vivan will be jumping, and Sia will be jumping. So in this way you can frame your sentences according to the type of the sentence in the future continuous tense. Now the second one is, if you want to frame the sentences negative. So what will the structure to frame the negative sentences? Here only a single change is here. Same subject, if you have I or we as a subject, then shall, then be or not first, be or not first, what will come first? Be will come or not will come? Shall, then not, then be, then your word fourth form. Okay, if you have the first person as a subject, but if you have the second person as a subject, then you, they, he, she, it, and now. Now second person or third person if you have, then will, not, be, and verb fourth form. If you have the same verb here, so how can you frame the sentences? I shall not be jumping, we shall not be jumping. Same as you will not be jumping, they will not be jumping, he will not be jumping, she will not be jumping, it will not be jumping, Rehan will not be jumping, Vivan will not be jumping, and Sia will not be jumping. Okay, in this way you can change a positive sentence into negative easily. But only you have to put a negative word between the shall and be. Okay. So now if you want to frame the sentence in interrogative of simple future continuous tense, so what will the structure? The structure is, as you know that to frame the interrogative sentences we take the auxiliaries first. So what will the auxiliaries here? Will and shall. So take the auxiliary first according to the first person shall. Then what will come? Shall, your subject,
I and we. Shall, your subject, then be plus verb fourth form, and at the last question mark. Same like that, if you have the subject second person or third person, then will plus second person or third person, then be, then verb fourth form, and then the last question mark. If you have the same verb here to frame the sentences, so how can you frame the sentences? Shall I be jumping? Shall I be jumping? Shall we be jumping? Okay, same like that. Will you be jumping? Will they be jumping? Will he be jumping? Will she be jumping? Will it be jumping? Will Rehan be jumping? Will Vivan be jumping? Will Sia be jumping? Don't forget to put the question mark at the last of the interrogative sentences. Now the last one is, if you want to frame the sentence into interrogative negative. So what will changes here? Put the not. So in this way you can change easily interrogative sentence into interrogative negative. Easy way, you can put a negative word between shall and be before the after the subject. Here you can see also, if we have the same verb to frame the sentences, how can we frame? Shall I not be jumping? Shall we not be jumping? Will you not be jumping? Will they not be jumping? Will he not be jumping? Will she not be jumping? Will it not be jumping? Will Rehan not be jumping? Will Vivan not be jumping? Will Sia not be jumping? And as usual, don't forget question mark at the last. Okay, so in this way you can frame the sentences of future continuous according to the type of the sentences. Now the uses of the future continuous tense, where we can use the future continuous tenses. So now here are the uses of future continuous tense, where we can use the future continuous tense. First one is the action, to express the action which will occur in the normal course, कि जो फ्यूचर के अंदर एक नॉर्मल कोर्स के अंदर जो एक्शन होने वाला है उसका एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, ही विल बी विजिटिंग अंकल जेम्स इन मार्च, कि वो अंकल जेम्स से मिलने जा रहा है, मिलने वाला है in March. Okay, so it is in the normal course, action which will occur in the normal course. Okay, to express that type of actions we will use future continuous tense. Now the second one is action will be in progress, that the given time in the future, उस टाइम पीरियड के अंदर फ्यूचर का जो टाइम गिवन है उसके अंदर वो एक्शन प्रोग्रेस के अंदर हो. फॉर एग्जांपल, एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी रिवाइजिंग फॉर द टेस्ट, कल इसी समय हम अपने टेस्ट के लिए रिवाइज कर रहे होंगे. दैट मीन्स देयर एक्शन इज इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर, नॉट इन दैट राइट नाउ, बट इन द फ्यूचर दैट द एक्शन विल टेक प्लेस एंड इन द कंटिन्यूटी फॉर्म इट विल हैपन. एक कंटिन्यूटी फॉर्म के अंदर ये चलेगा कि इस टाइम पे हम कल रिवाइज करेंगे. ऐसा तो नहीं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि आपने बस एक पन्ना पलटा और आपको रिवाइज हो गया. आपका ड्यूरेशन होगा, आपको कुछ टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए, तो वो प्रोग्रेस के अंदर होगा. सो टू एक्सप्रेस द एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर. फॉर द एग्जांपल, एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी रिवाइजिंग फॉर द टेस्ट. ओके, in the interrogative sentences
as you know that we put the auxiliaries first. If you use will in interrogative sentences, in that time will is used here to express the polite questions. To express the polite question. It is not express the request or polite request. If it express the request, then it used as a modal. Here is used as a helping verb. If we use it as a modal, then will is expressed that request, polite request. Okay, so रिमेंबर दैट थिंग्स. अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप विल को फर्स्ट पहले लेकर आ रहे हो तो विल वहाँ पे पोलाइट क्वेश्चन को एक्सप्रेस करेगा, ना कि रिक्वेस्ट को. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. इन दिस वीडियो we have taught about the two tenses, simple future tense and the second one is future continuous tense. So dear students, listen the video carefully, do your practice work attentively after listening the video, and in the next video we will teach about the future perfect and future perfect continuous tense. So after that our tenses series will be completed. So till then, goodbye, take care, stay home.